In the last video, as you saw, circle ऐसा ही था, but it was near the west side and it was a city circle, जैसे कि जहाँ पे बहुत सारी buildings present हो in the center. So if you are a team on the edges and it is the second shift of the zone, then आपको पता होना चाहिए कि most of the teams hesitate to go for the center on the early phase, क्योंकि if you go early in the center आपको सर्कल से एग्जिट लेने में मुश्किल होगी. बट एज यू कैन सी राइट हियर, अभी सर्कल ये है. सो इवन इफ यू गो फॉर द सेंटर और अर्बन सर्कल, यू कैन कन्वर्ट और मेक यूज ऑफ दिस बिल्डिंग एंड आप यहाँ से एग्जिट भी बना सकते हो, क्योंकि these buildings are further as compared to, like you can see, San Martin or Picardo type, क्योंकि वहाँ पे buildings are a lot closer and वहाँ पे exit area कम है. So here lack of area, you can play on this part and you can still make an exit. So if you go for this part, I'll show you right now. जैसे ही shift आता है, again see the city is completely empty, but the team that has the read of it is, you can see right here, orangutan सीधा आती है and Aru has complete read of this part, and you can see the split right here, full on city का split. सिर्फ और सिर्फ orangutan ने hold किया है. You can see how they created a line, full area they have covered it, and now you can see right here, जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आता है again, you can see their holdings. अभी पता है दे नो पीछे तो कोई है नहीं, and now अगर कोई टीम आएगी भी from this part or this part, they will directly come from here, or they will go for in the front. So as you can see now, orangutan ने पूरा center ही hold कर दिया है, a proper split of 4 men in the center. And now the area that they are playing, it is very easy to hold if you are a proper holding team. You don't overcommit or you don't do any extra things from here. Now you can see closely orangutan के पास कितना area है and how easily they can hold off यहाँ पे and यहाँ पे. Just picking off kills from here was their duty from right here. And orangutan ने gamble लिया, but Aru had also proper knowledge की how the lobby is playing. And now you can see, even if the next zone comes, still orangutan पे control है. So you can call this a gamble, but most importantly it's called map reading. तो अगर आप map read अच्छे से कर रहे हो, you are keeping in mind the timing and the rotations of the team, so it can help you a lot. And here as you can see, Metaninja का एक player opening create करने आता है in the edge, but Windgod को पता लग गया कि players are coming from the behind and वो zone के बाहर है. So they went to regroup with their teammates, which was a good call. And now you can see there are 4 men in a compound, so उस position से this is a far better choice. So now as you can see, zone धीरे धीरे क्लोज इन हो रहा है. नाउ यू कैन सी LAFK पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है. VS को जोन में आना था, दे न्यू यहाँ पे फाइट हो रही है. सो नाउ OG ने भी देख लिया हियर टू पिक ऑफ स्किल्स, एंड नाउ एज यू कैन सी LAFK वाइप हो जाती है बिकॉज दे कुड नॉट हैंडल द प्रेशर, और दे हैड टू टेक अ फाइट बट कुड नॉट होल्ड इट. सो नाउ दिस क्रिएट्स अ साइकिल फॉर द अदर टीम्स. Now VS को पता है नेबुला की फाइट भी हो रही है, but VS plays carefully on the ridges, and as you can see right here, orangutan को पता है अब they have to look for the center also, क्योंकि यहाँ से teams this part में close in कर सकती है. And now this part is in the zone, but अब divine को भी zone में आना है, VS को भी and nebula को भी, बस reckoning सिर्फ zone में है. So now you can see orangutan one by one pick off होती जा रही है, and now you can see the pressure is completely on this side of the map for 2 teams. And now these teams also face a fight, क्योंकि सभी को जोन में आना है. बट जैसे ही जोन क्लोजिंग होता है, you can see right here, reckoning को भी जोन में आना है. And now reckoning पूरा जोन कवर कर लेती है. You can see बैक से तो कोई आएगा नहीं, रोमन is looking forward, रोमन के कवर में है, and you can see these 2 guys are looking for the back.
So now orangutan has no choice but to make use of the ridges and attack this area. Orangutan does well, and डिवाइन के प्लेयर्स भी खा जाते हैं एंड orangutan #2 आ जाती है. So some of the teams might just stick here, यहाँ पे स्मोक करके होल्ड करना है, बट this was the right call क्योंकि ridges है, so you can take a bet here कि आप फाइट निकाल सकते हो. So next time when you are stuck somewhere and आपके पास better opportunity है, आपको बैठना नहीं उस एरिया पे, you need to create more chances for your